Yes. So as I told, I'll consider that you know the significance of CE, okay, and PE. Okay, so CE means you will buy a option whether it is index, okay, Nifty or Bank Nifty, or whether it is a particular stock. You will buy CE when you are bullish. When you are bullish means if you buy CE, you want the market to go up or your stock to go up or that Nifty or Bank Nifty to go up. Okay. Similarly, when you buy PE, you want that index Nifty to go down or Bank Nifty to go down or stock to go down. Okay. CE means क्या होगा? You will buy a call. If it goes in your direction, then your option premium it will increase. It will increase. Okay. अगर आप put buy करते हो, okay, then you want it to go down. You want it to go down. Then your put value will increase. Your put option premium will increase. Okay. But let's say you buy a call. You buy a call. Then if the market goes down, or that particular stock goes down, then your call value will decrease. Your call value will decrease. Similarly, if you buy a put, and if the index goes up, or the stock goes up, or it goes against your direction, then what happens? You will lose premium of that put. Okay. There is one more thing. It may happen that if you buy a call and the market will remain in the same direction, matlab, or that stock it starts trading just in 1 or 2 rupees, matlab, very small range, then what happens? You will lose premium. Whether it is call or put, you will lose premium. These things will happen. And one more is there, IV, which is implied volatility. You should not buy option if the implied volatility is very high. If it is say 75-80, if you buy option, even the stock goes in your direction, then also you will see that there is no significant rise in the option premium. Okay, IV becomes very important. Similarly, when IV is very low, let's say 25% or 20%, then if you buy option, then after you are buying that option strike, मतलब ऑप्शन आपने बाई कर लिया, तो क्या सडनली इफ द IV इंक्रीजेस, तो 25 to 50 हो गया ना, अगर आपका स्टॉक मतलब वही के वही है, तो भी क्या होगा, आपका ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा. दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हैज मेजर इम्पैक्ट ऑन ऑप्शन प्रीमियम. ओके, कभी कभी होता है ना, मतलब आपका इंडेक्स मूव नहीं कर रहा है, ओके, निफ्टी मूव नहीं कर रहा है, ऑप्शन फिर भी बढ़ रहा है. दैट इज बिकॉज ऑफ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. समटाइम्स यू हैव सीन दैट इंडेक्स इज गोइंग अप बाय 50 रुपीज बट ऑप्शन इज नॉट मूविंग. आपने ऑप्शन बाई किया है कोई स्ट्राइक का, वो मूव नहीं कर रहा है. क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपने बाई किया था जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी था 75-80, तो वो कम हो रहा है. सडनली इट कम्स टू 45-50, तो क्या होगा, आपका जो डायरेक्शन आपका करेक्ट है, फिर भी आपका ऑप्शन प्रीमियम नहीं बढ़ेगा. सो देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस. ओके, आई हैव ट्राइड टू गिव अ ब्रीफ आइडिया. नाउ व्हाट विल डू, we'll take Nifty example. Nifty closed I think around 14,825 rupees. Okay, Nifty closed around 14,825. Okay, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, वो हमको पता नहीं है. Now we'll discuss about call side. We'll take only call sides. So Nifty call, we have Nifty 14,900 call, 14,950 call, and we have 14,850 call. Now only I'm discussing about call. Okay, then we have 1,500 call. आपको सब ये पता है. Then also we have 14,800 call. Okay, आपको पता है 14,750 का भी कॉल है. and 14,700 call. Nifty में for every 50 points there is a strike price, 14,650. So these are the strike prices.
So sorry to interrupt, but if you are writing something on screen, we cannot see the screen. Could you please share the screen? Yes, Thank you, sir. I totally forget to share the screen. Extremely sorry. Okay, so I was telling you about that direction of the Nifty and this bank Nifty or a particular strike, and I told you about IV. So 14,825 is the Nifty which closed around 14,825. तो ये होगा CMP. Then we have 14,800 and 14,850. As they are very close to the closed CMP of Nifty, so these are known as ATM options, at the money options, or ATM options, at the money, ATM options. Okay, and कॉल के साइड के लिए ये जो है ना, as they are inside, as they are slightly inside the current market price, these are known as in the money options. In the money options. अगर हम 14,000 की बात करें, that will become deep in the money, 14,000 or 14,200 for that matter, 14,200. The options which are very inside, those are known as deep in the money options, and these are known as OTM options. These are known as OTM options. Okay. Usually, it is better to buy ATM options. It is better to buy ATM options. Okay. Now, I am considering all these call options, and we consider that May expiry. I think May 13 is the expiry date, which is Thursday. These are all we are considering May 13. Okay, I don't know the values. We will take some random values. We will not take exact values. We will take some random values and we will try to understand. So first we will try to calculate 14,800 call value. So 14,800 is the strike price, 14,800 CE. Let's say its premium is 125 rupees. आपने अगर आपको इस 14,800 बाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 125 रुपीज दे के, मतलब पर that 125 into 75, so much you have to pay and buy, correct? This everybody knows. So by paying 125 into 75, you will buy this call. So after buying, your expectation, what is your expectation? You want Nifty to go in your favor, means you want the Nifty to go 14,900, 14,950, 15,000. Okay, this is your expectation. Okay, आपने अभी बाई करके रखा है. So let's consider at the time of expiry. एक्सपायरी के दिन ये 14,950 को एक्सपायरी होता है. Okay, Nifty will move from 14,825 to 14,825, तो इट विल मूव टू 14,950. तो एक्सपायरी यहाँ पे होगा. So you thought that Nifty will move up and you bought a call, so you are perfect. Okay, you got it right. So at the time of expiry, Nifty expired at 14,950. 14,950 को expiry होता है. Okay, so at this time, so what you have done is you have bought 14,800 call at 125 rupees. At the time of expiry, how much you will get back? How much you will get back? We'll try to calculate that. Okay, so CMP or expiry at the time of expiry, Nifty expired at 14,950 and your strike price is 14,800. You have bought 14,800 call. Nifty expired at 14,950. Nifty यहाँ पे जाके बंद हुआ 14,950 पे. So you have to take the difference. Difference कितना आएगा? 150. Difference आ रहा है 150 का. Okay. So actually this is the real value what you will get at the time of expiry. This is the real value what you will get at the time of expiry. So it is like current market price of Nifty minus the strike price.
minus the strike price is actually the real value. Just for making it simple case, I am considering on the day of expiry on Thursday, Nifty is here. Nifty ने यहाँ तक आके मतलब यहाँ पे निफ्टी बंद हुआ, तो जो रियल वैल्यू है ना ऑप्शन का, दैट इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इंडेक्स और एनी स्टॉक माइनस the strike price what you have bought. So you have bought 14,800 strike price. Okay, so 14,950 minus 14,800 is 150 rupees. 150 rupees आपको ना प्रीमियम आपको मिल जाएगा. Okay, now actually what is this option premium? That formula I'll write, then you'll get fair idea. So option premium is equals to I think you have heard about intrinsic value, IV. Intrinsic value, there is something called intrinsic value. Intrinsic value is the real value. Intrinsic value, okay, plus extrinsic value so this is actually the option premium formula. Intrinsic value plus extrinsic value. Intrinsic value is actually the real value. Okay, intrinsic value is the real value. Try to understand this one. Intrinsic value is real value, very important. Intrinsic value is real value. Actually, this is what you get at the time of expiry. And extrinsic value is time value or something which is virtual. Okay, now this time value at the time of expiry means at the time Thursday 3:30, this goes to 0. Extrinsic value completely goes to 0, or time value will go to 0 at the time of expiry. So you have paid 125 rupees today or Friday. एक्सपायरी यहाँ पे होता है, तो आपका अगर ऑप्शन आपको कितना मिलेगा, ऑप्शन प्रीमियम आपको कितना मिलेगा? सो दैट इज एक्चुअली विल गेट 150 रुपीज. 150 रुपीज व्हाट विल गेट? इंट्रिंसिक वैल्यू आपका 150 आ रहा है, प्लस टाइम वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा. दिस इज ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी. ओके, सो एट 3:30 PM Thursday the time value will go to 0. Okay, as of now if I calculate the option premium and if I check the intrinsic value and extrinsic value, what is that? We'll calculate that also. This is as on Thursday 3:30. ये हो गया हमारा Thursday 3:30. Okay, थोड़ा as I'm using mouse so it is not so clear. तो अभी की हम बात करें ऑप्शन प्रीमियम. Okay, so you have paid 125 rupees. In that, how much is the intrinsic value? So to calculate that, we know current market price है 14,825 and strike price you have bought it 14,800. So what we have to do is 14,825 is the current market price minus 14,800. So this will give you the real value or the intrinsic value, which is 25 rupees only. Okay, so this will be like 25 rupees plus about 25 whatever we have paid, that is only the extrinsic value or the time value. So I have paid 100 rupees for the time value. आपने जो भी 100 rupees पे किया है ना, आपने पूरा टाइम वैल्यू के लिए दिया है, which is not real. Intrinsic value is real. So this is only your real money or real value what you are getting. Remaining is the extrinsic value और time value. जैसे टाइम कम होते जाएगा, मतलब yesterday was Saturday, अपने सैटरडे का प्रीमियम लूज कर दिया, इसमें से ना आपने कुछ पैसा अभी आपका चला गया, मतलब आपने कुछ प्रीमियम अभी लूज कर दिया 100 में से. संडे यू आर ऑल्सो लूजिंग नाउ. ओके, यू आर लूजिंग द प्रीमियम नाउ because the time is going, no, there is decay in time. तो सैटरडे एंड संडे का हमने प्रीमियम लूज कर दिया.
Okay, so only you have is, please wait a minute. So only we have is this 25 rupees, which is real value, which is real value. Okay, so this thing we should know, this thing we should know. Similarly, if I take say 14,850 अगर हम लेते हैं, एक मिनट. So let's try to calculate 14,850. So just consider for 14,850 strike, what is the premium. एक बार 14,850 का let's say इसका प्रीमियम 14,850 CE का प्रीमियम है जस्ट फॉर केस 75 रुपीज. किसको पता कितना है, बट जस्ट फॉर हमारे एग्जाम्पल के लिए हम इसको एक बार के लिए हम इसको क्या करते हैं 75 रुपीज RS पकड़ते हैं. ओके, तो व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ दिस. वी नो दैट निफ्टी क्लोज अराउंड 14,825 माइनस 14,850. सो इट इज कमिंग एक्चुअली नेगेटिव साइड में आ रही है, -25. Okay, so that means this is actually zero. Negative is always considered to be zero. So आपका जो रियल वैल्यू है ना, there is no real value in this 14,850 strike. रियल वैल्यू नहीं है. तो अगर हम इस ऑप्शन प्रीमियम की बात करेंगे तो ऑप्शन प्रीमियम ओके, the real value or the intrinsic value, if I talk, the intrinsic value or real value is 0 plus how much you have paid. You have paid 75 rupees. So whatever you have paid is only extrinsic value or time value or extrinsic value. तो आपने जो भी पे किया है ना, वो आपने मतलब एक इमेजिनरी वैल्यू पे किया, एक्सट्रिंसिक वैल्यू. आपका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट योर इन द मनी, ये आपका इनसाइड नहीं है. सो ये हो गया ATM. अगर जब निफ्टी 14,850 के बाहर जाता है तभी आपको कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू मिलता है. जैसे कि जब 14,850 क्रॉस करेगा निफ्टी मंडे को, 14,850, 875, 14,900. सो 14,900 के पास आपको 50 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा. दैट विल बी रियल. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड. सो एज ऑफ नाउ दिस 75 रुपीज इज देयर, नो. This will go on decreasing with time, and exactly at 3:30 p.m. Thursday that goes to zero. Let's suppose Nifty अभी 14,825 पे ही एक्सपायरी होता है, 14,825 पे ही एक्सपायरी होता है थर्सडे को. So this 75 rupees will go to zero and you will lose your entire premium. Okay, so whatever the discussion we have made, exactly opposite is for put side. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं just for understanding. Okay, just one example. अभी हमने देखा 14,825 निफ्टी का CMP है. निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ है. इमेजिन थोड़ा आगे पीछे रहेगा. So let's suppose 14,800 PE, it is trading around 150. किसको पता कितना है, but we consider just for understanding purpose, let us consider it is at 150 RS इसका प्रीमियम. ओके, तो देखो पुट तो आपको पता है, आपको नीचे जाना चाहिए मार्केट, तभी आपका पुट का वैल्यू बढ़ेगा. यू वांट द मार्केट टू गो डाउन इफ यू आर बाइंग अ पुट. ओके, so in this case what is the real value. so option premium हमको पता है, हमने 150 रुपीज पे कर दिया है. इसमें there are two things. one is that intrinsic value, एक है अपना intrinsic value और एक है अपना extrinsic value which is time value. this already we know. इसमें कितना intrinsic value है, कितना extrinsic value है, वो पता करना पड़ेगा. So here 14,825. Okay, here we will reverse the formula, or we know that we want it to go downside. So 14,800 strike अपना है, 14,800 strike हमारा है. हमने बाई किया है, मतलब निफ्टी करंट पे है 14,825. तो इधर -25 आ रहा है.
In the put case, you first write down the strike, then you write down the current market price. You just reverse it. Whatever you have done for call side, you just exactly reverse the procedure for put side. तो ये आपका नेगेटिव आ रहा है, सो आपका रियल वैल्यू जो है ना वो 0 है. So if I write it here, this is 0 plus whatever 150 rupees you have paid only for time value or extrinsic value. अगर एक्सपायरी निफ्टी का 14,800 के पास और 14,810 और 14,825 पे होता है, so you'll lose this entire premium. You will lose this entire premium. As of now, the premium is high because we have still so much time to left for expiry. Okay, let's say expiry happens at 14,700. 14,700 को CMP आ जाता है निफ्टी का, तो एक्सपायरी यहाँ पे होता है. एक्सपायरी थर्सडे 3:30 PM. तो क्या होगा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 14,700, ओके, 14,700 is your strike price. 14,800 is your strike price. So strike price is 14,800 minus आपका एक्सपायरी CMP. हम एक्चुअली कॉल साइड में हमने रिवर्स किया था, हमने लिया था CMP माइनस स्ट्राइक प्राइस. हमने क्या लिया था, ऑप्शन का स्ट्राइक माइनस CMP. अभी हम इसको उल्टा कर रहे हैं, ऑप्शन स्ट्राइक माइनस CMP, ऐसा कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमको 100 आएगा, 100 रुपीज प्रीमियम व्हाट वी आर गेटिंग. एक्चुअली दिस इज रियल वैल्यू. तो अगर एक्सपायरी यहाँ पे होता है तो हाउ मच वी विल गेट, ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल्स टू, वी नो दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू. हमको तो ये पता है कि जब एक्सपायरी होगा इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू विल बी 0. Okay, so this is at 3:30 PM Thursday and this is based on the real value. एक्सपायरी यहाँ पे हुआ, आपने ये स्ट्राइक बाई किया था, तो आपको 100 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगा. रिमेनिंग टाइम वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू